सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। माननीय सदस्यगण, मुझे अपनी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से अंतर संसदीय संघ आईपीयू की प्रेसिडेंट और तंजानिया संयुक्त गणराज्य की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष अतिथि के रूप में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई है। शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई 2024 को भारत पहुंची। उन्होंने 21 जुलाई 2024 को सफल प्रवास की कामना करते हैं। हम अंतर संसदीय संघ के प्रेसिडेंट के रूप में उनकी भूमिका के लिए सफलता की भी कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम तंजानिया गणराज्य की संसद के सदस्य, मान्य सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से मिलेगी, अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध करा दी जाएगी। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Honorable Speaker, I present the budget for Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, faith, and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender, global context, the global economy, while performing better than expected, disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation. In this context, India's economic growth continues to be the shining inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel, currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva, and Annadata. Prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of Atma Yojana, was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget theme: turning attention and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling, and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. In the interim budget, this budget envisages sustained efforts and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3,
inclusive human resource development and social justice. 7. Infrastructure. 8. Innovation, research and development. And 9. Next generation will be carried out as part of the economic policy framework about which I will speak later in this speech. This budget details some of the specific actions to be initiated in the current year towards fulfillment with intent to strengthen them and step up their implementation for excellence in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate-resilient varieties. Both from the government and outside will oversee the conduct of such. To field and horticultural crops will be released. 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. Missions for pulses and oilseeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oilseeds, we will strengthen their production, storage, such as mustard, groundnut, sesame, soybean, and sunflower. Vegetable production and supply chains. Large-scale clusters for vegetable production, for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. Our government, in partnership with the states, will facilitate the implementation of the digital public infrastructure in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be enabled in 5 states. Shrimp production and export. Financial support for setting up a network of nucleus breeding centers facilitated through NABARD. National cooperation policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly, and all-round development of the cooperative sector. Fast-tracking growth. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. Our government will implement following 3 schemes for employment-linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. Scheme
will cover additional employment in all sectors. All additional employment within a salary of 1 to 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. The scheme is expected to incentivize additional employment of 50 lakh persons. Participation of women in the workforce. We will facilitate hashing creches. In addition, the partnership will seek to organize skilling program. I'm happy to announce a new centrally sponsored scheme as the fourth scheme under the Prime Minister's package for skilling in collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled. Institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design will be aligned to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs. Skilling loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees with a guarantee from a government promoted fund. This measure is expected to help 25,000 students every year. Benefit under government schemes and policies, I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. E-vouchers for this purpose, e-vouchers of the loan amount. Priority 3, inclusive human resource development and social justice. People, particularly farmers, youth, women, and the poor. For achieving social justice comprehensively, the saturation approach of covering all eligible people through various programs, including those for education and health, will be adopted to empower them by improving their capabilities. Implementation of schemes meant for supporting economic activities by craftsmen, artisans, self-help groups, scheduled caste, and Stand Up India will be stepped up. Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata industrial corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in a growth trajectory. Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed, provided the requests of Bihar government for external assistance
from multilateral development banks will be expedited. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram. This will facilitate our country's food security as well. Under the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways and roads. In Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore Industrial Corridor. An additional allocation will be provided in Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. Under the PM Awas Yojana, in rural and urban areas in the country have been announced, for which the necessary allocations are being made, of more than 3 lakh crore for schemes benefiting role in economic development. Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan, for improving the socio-economic condition of tribal communities, we will launch the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts. This will cover 63,000 villages, benefiting 5 crore, will be set up in the Northeast region to expand the banking services. Structure. Priority 4, manufacturing and services, support for promotion of MSMEs. This budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly labor-intensive manufacturing. We have formulated a package covering financing, regulatory changes, and technology support for MSMEs to help them grow and also compete globally, as mentioned in the interim budget. I am happy to announce the following specific measures. Credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs. A separately constituted self-financing guarantee fund will provide to each applicant guarantee cover up to 100 crore rupees, while the loan amount may be larger. The borrower will have to provide an upfront guarantee fee and an annual guarantee fee on the reducing loan balance. New assessment model for MSME credit. Public sector banks will build their own in-house capability to assess MSMEs for credit instead of relying on external assessment. They will also take a lead in developing or getting developed a new credit assessment model based on the scoring of digital footprints of the MSMEs in the economy. This is expected to that will also cover MSMEs without a formal accounting system. Credit support to MSMEs during stress period. I'm happy to announce a new mechanism
for facilitating continuation of bank credit to MSMEs during their stress need credit to continue their business and to avoid getting into the NPA stage. Credit availability will be supported through a guarantee from a government-promoted fund. Mudra loans. The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. Enhanced scope for mandatory onboarding in TREDS. For facilitating MSMEs to unlock their working capital by converting platform from rupees 500 crore to 250 crore rupees. This measure will bring 22 more CPSCs and 7,000 more companies in MSME clusters. SIDBI will open new branches to expand its reach. For such branches this year, the service coverage will expand to 168 out of 242 major clusters. MSME units for food irradiation units in the MSME sector will be provided. Setting up of 100 food quality and safety testing labs with artisans to sell their products in international markets. E-commerce export hubs will be set up in public-private partnership mode, one roof. Measures for promotion of manufacturing and services. Internship in top companies. As the fifth scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain an internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. Industrial park structure in or near 100 cities in partnership with the states and private sector by better using town planning schemes. 12 industrial parks under the national housing, rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be, just 1 minute. Rental housing, I repeat, rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be facilitated in PPP mode with VGF support to improve the share of Indian shipping industry and generate more employment. Critical mineral mission is acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled offshore mining of minerals. Our government will launch the auction of the first tranche of offshore blocks for mining, building on the exploration already carried out. Digital public infrastructure applications. Turning to the services sector, I propose development of DPI of the areas of credit, e-commerce, education, health, law and justice, logistics. MS technology platform will be set up for improving the outcomes under the Insolvency Bankruptcy Code for achieving consistency, transparency, timing, accelerated corporate exit. CPACE will be extended for voluntary closure of LL 1,000 companies, resulting in direct recovery of 3.3 lakh crore to creditors. Crore rupees have been disposed of even prior to admission.
Additional tribunals will be established. Out of those, some will be notified to decide cases exclusively under the Companies Act. Debt recovery. Steps for reforming and strengthening debt recovery tribunals will be taken. Additional hubs. Working with states, our government will facilitate development of cities as growth hubs. This will be achieved through economic and transit planning and orderly development of peri-urban areas utilizing town planning schemes. Creative redevelopment of cities. For creative brownfield redevelopment of regulation. Transit-oriented development. Transit-oriented development plans for 14 large cities with a population above 30 lakh will be formulated along Urban 2.0. Housing needs of 1 crore urban poor and middle class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. This will include the set loans at affordable rates is also envisaged. In addition, enabling policies and regulations for efficient and transparent rental housing markets with enhanced availability will also be put in place. Water supply and sanitation. And solid waste management projects and services for 100 large cities through bankable projects. Street markets. Building on the success of PM Swanidhi scheme in transforming the lives of street vendors, our government or street food hubs in select cities. Stamp duty. We will encourage states which continue to charge high stamp duty to moderate the rate will be made an essential component of urban development to sustain high and more resource efficient economic growth, along with the energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. We will bring out a policy document on appropriate energy transition pathways that balances the imperatives of employment, growth, and environmental sustainability. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. The announcement in the interim budget, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants to enable 1 crore households, more than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications, and we will for electricity storage and facilitating smooth integration of the growing share of renewable energy with its variable and intermittent nature in the overall energy mix. Research and development of small mix for Vikasit Bharat. Towards that pursuit, our government will partner with the private sector for 3. Research and development of newer technologies for nuclear energy. The R&D funding announced in the interim budget, thermal power plants. The development of indigenous technology for advanced ultra supercritical thermal power plants with much higher 800 megawatt commercial plant using AUSC technology. The government will provide the required fiscal support. Moving forward, development of indigenous capacity for the production of high-grade steel and other advanced metallurgy materials for these plants will result in strong spin-off benefits for the economy. Roadmap for hard-to-abate industries. A roadmap for moving the hard-to-abate industries from energy efficiency targets, perform, achieve, and trade mode to Indian carbon market mode will be put in place.
support to traditional micro and small industries, and investment will be facilitated. Financial support will be provided for shifting them to cleaner forms of energy and implementation of energy efficiency measures. The scheme will be replicated in another 100 clusters in the next phase. Priority 7, infrastructure investment by central government. Significant investment the central government has made over the years in building and improving infrastructure has had a strong multiplier effect on the economy. We will endeavor to maintain strong fiscal support for infrastructure over the next 5 years in conjunction with imperatives of other priorities and fiscal consolidation. This year, I have provided 11,11,111 crore rupees for capital expenditure. We will encourage states to provide support of similar scale for infrastructure, subject to their development priorities. A provision of 1.5 lakh crore rupees for long-term interest-free loans have been made this year also to support the states in their resource allocation. Private investment in infrastructure. Investment in infrastructure by private sector will be promoted through viability gap funding and enabling policies and regulations. A market-based financing framework will be brought out. All-weather connectivity to 25,000 rural habitations. Flood mitigation. Bihar has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through the Accelerated Irrigation Benefit Program and other sources, will provide financial support for projects with estimated cost of 11,500 crore rupees, such as the Kosi-Michi intra-station projects. In addition, survey and investigation of Kosi-related flood mitigation and irrigation projects will be undertaken. Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River and its tributaries. Himachal Pradesh suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. Cloudbursts and massive landslides, we will provide assistance to the state. Recently, Sikkim witnessed devastating flash floods and landslides that wreaked havoc across the state. Our government will provide assistance to the state. Tourism has always been a part of our civilization. Our efforts in positioning India as a global tourist destination will also create jobs, stimulate investments, and unlock economic opportunities for other sectors. In addition to the measures outlined in the interim budget, I propose the following measures. Vishnupad Temple at Gaya and Mahabodhi Temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive development of Vishnupad Temple Corridor and Mahabodhi Temple Corridor will be pilgrim and tourist destinations. Rajgir
Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara Muniswarata temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi or the 7 hot springs form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious stature. Odisha's scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscapes, and pristine beaches make it an ultimate tourism destination. Our government will provide assistance for their development to Odisha as well. Priority 8, innovation, research and development. We will operationalize the Anusandhan National Research Fund for basic research at commercial scale with a financing pool of 1 lakh crore rupees in line with the announcement in the interim budget. Space economy. With our continued emphasis on expanding the space economy by 5 times in the next 10 years, a venture capital fund of 1,000 crore rupees will be set up. Priority 9, next generation reforms. Economic policy framework. We will formulate an economic policy framework to delineate the overarching approach to economic development and set the scope of the next generation of reforms for facilitating employment opportunities and sustaining high growth. Our government will initiate and incentivize reforms for 1. Improving productivity of factors of production, and 2. Facilitating markets and sectors to become more efficient. These reforms will cover all total factor productivity and bridging inequality. Effective implementation of several of these for promoting competitive federalism and incentivizing states for faster implementation of reforms, I propose to earmark a significant part of the 50-year interest-free loan. Working with states, we will initiate the following reforms. Land-related reforms and administration, planning and management. And 2, urban planning usage and building bylaws. These will be incentivized for completion within the next 3 years through appropriate fiscal support. Rural land-related actions. Rural land-related actions will include 1. Assignment of unique land parcel identification number, UL PIN, or Bhu Aadhaar for all lands. 2. Digitization of cadastral maps. 3. Survey of subdivisions, survey of map subdivisions as per current ownership. 4. Establishment of land registry. And 5. Linking to the land-related actions. Land records in urban areas will be digitized with GIS mapping, an IT-based system for property record administration, updating and tax administration forms. Service to labor. Our government will facilitate the provision of a wide array of services to labor, including those for employment and skilling. A comprehensive integration of eShram portal with other portals will facilitate such one-stop solution. Open architecture databases for the rapidly changing labor market, skill requirements and available job roles, and a mechanism to connect job aspirants with Shram Suvidha and Samadhan portal will be revamped to enhance ease of compliance for industry and trade.
capital and entrepreneurship related reforms, financial sector vision and strategy. For meeting financing needs, capacity and skills. This will set the agenda for the next 5 years and guide the work of the government, climate finance for enhancing the availability of capital for climate adaptation and mitigation. This will support achievement of the country's climate for providing an efficient and flexible mode for financing leasing of aircrafts and ships and pooled funds of private equity through a variable company structure. Foreign direct investments and overseas investment. The rules and regulations for foreign direct investment and overseas investments will be simplified to 1. Facilitate foreign direct investments, 2. Nudge prioritization, and 3. Promote opportunities for using Indian rupee as a currency for overseas investment. NPS Vatsalya. NPS Vatsalya, a plan for contribution by parents and guarantee a normal NPS account. Use of technology. We have successfully used technology for improving productivity and bridging inequality in our economy during the past 10 years. Public investment in digital infrastructure and innovations by the private sector have helped in improving access of all citizens, particularly the common people, to market resources, education, health and services. We will step up adopting working on the Jan Vishwas Bill 2.0. Further, states will be incentivized for improving data governance, collection, processing and management of data and statistics, different sectoral databases in new pension scheme. The committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I am happy to employees has taken a constructive approach. A solution will be evolved 24-25. For the year 24-25, total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 32.07 lakh crore rupees and 48.21 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 25.83 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated at 4.9% of the GDP. The gross and the net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.01 lakh crore rupees and 11.63 lakh crore rupees respectively. Both will be less than that in 23-20, the deficit below 4.5% next year. The government is committed to staying the course. From 2026-27 onwards, our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that the central government's debt will be on a declining path as percentage of GDP. I will now move to part B. Indirect taxes. Sir, I start with GST. It has decreased tax incidence on the common man, reduced compliance burden and logistics cost for trade and industry, and enhanced. We will strive to further simplify and rationalize the tax structure and endeavor to expand it to the remaining sectors. My proposals for customs duties intend to support domestic manufacturing, deepen local value addition, promote export competitiveness, and simplify taxation while keeping the interest of the general public and consumers surmount. In Budget 22-23, we reduced the number of customs duty rates. I propose to undertake a comprehensive review of the rate structure over the next 6 months
to rationalize and simplify it for ease of trade, removal of duty inversion, and reduction of disputes. I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical and flat panel detectors for use in medical X-ray machines, mobile phone and related parts. With a threefold increase in domestic production, in the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA, and mobile charger. Rare earth elements are critical for sectors like nuclear energy, renewable energy, space, defense, telecommunications, and high-tech electronics. I propose to this will provide a major fillip to the processing and refining of such minerals and help secure the fight against climate change. To support energy transition, I propose to expand the list of exempted capital goods for use in the manufacture glass and tinned copper interconnect. I propose not to extend the exemption of custom duties provided to them. Crores of rupees. Frozen shrimp accounted for about 2/3 of these. Worms, shrimp, and fish feed to 5%. I also propose to exempt customs duty on various inputs for manufacture of shrimp and fish to reduce BCD on real down-filling material from footwear and other leather articles for export. To rectify inversion in duty, I propose to reduce BCD subject to conditions on methylene diphenyl diisocyanate, rawhides, skin, and leather is proposed to be simplified. I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum production. I propose to remove the BCD on ferronickel and of 2.5% on copper scrap. Oxygen-free copper for manufacture of resistors. In the pipeline, I propose to increase the BCD on ammonium nitrate from 7.5% to 10%. Plastics, PVC flex banners are from 10 to 25%. Telecommunication equipment, to incentivize domestic manufacturing, I propose to increase the BCD from 10 to 15% on PCBA and boat and ship MRO. I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. Propose to extend the period for export of goods imported for repairs under warranty from 3 to 5 years. I now move to direct taxes. We will continue our efforts to simplify taxes, improve taxpayer services, provide tax certainty, and reduce litigation while enhancing revenues for funding the development and welfare schemes of introduction of simplified tax regimes without exemptions and deductions by tax regime in the financial year 22-23. Similarly, as per data available till the review of the Income Tax Act, I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the Act concise, lucid, easy to read, and understand. Embroiled in litigation, it is proposed to be completed in 6 months. A beginning is being made in the finance against taxation. Simplification for charities and TDS. 5% TDS rate on many payments is being merged into the 2% TDS rate and the 20% TDS rate on repurchase of units by mutual funds or UTI is being withdrawn. TDS rate on e-commerce operators is proposed to be reduced from 1 to 0.1%. Moreover, credit of TCS is proposed to be given to date
of filing statement for the same. I also lines for such defaults. Simplification of reassessment. I propose to thoroughly simplify years from the end of the assessment year only if the escaped income is 50 lakh rupees or more, up to a maximum period of 5 years from the end of the assessment year. Even in such cases, uncertainty and disputes. Simplification and rationalization of capital gains assets shall henceforth attract a tax rate of 20%, while long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. Listed financial assets held for more than a year will be classified as long-term, while unlisted financial assets and all non-financial assets will have to be and market-linked debentures, irrespective of holding period, however, will attract tax on capital gains at applicable income tax, have been digitalized. All remaining services of customs and income 2 years. Litigation and appeals. While our concerted efforts to reduce tension, to dispose of the backlog of first appeals, I plan to deploy more officers disputes pending in appeals related to direct taxes, excise and service with a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation. We will expand the scope of employment and investment. I have a few proposals to promote investment and foster employment. First of all, to bolster the Indian startup ecosystem called angel tax for all classes of investors. Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment-generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country. Number of skilled workers. To further promote the development of this sector, we would provide for safe harbor rates for foreign miners to reduce the corporate tax rate on foreign companies from 40 to 35%. Deepening the tax base. I have a couple of proposals for deepening the tax base, 0.02% and 0.1% respectively. Second, for reasons of equity, I propose to tax income received on buyback expenditure by employers towards NPS is proposed to be 10% of salary from the income of employees in private sector, public sector banks and undertakings opting for the new tax regime is proposed to be provided. Indian professionals working in multinationals get ESOPs and invest under the Black Money Act. Such non-reporting of movable assets, withdrawal of equalization levy of 2%. Expansion of tax Namidar on full and true disclosure so as to improve conviction under the Benami Transaction Prohibition Act 1988. Tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%;
and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 70. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone while annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. Item number 2. Item number 2. I rise to lay on the table the following statements: fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3. Sir, with your permission, I rise to move पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष व अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित। Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu Kashmir for the year 24-25. सभा की का तो देश का बजट निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया है। कल तक संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लगातार आप निर्मला सीतारमण को सुन रहे थे। संसद भवन में निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश किया जा रहा था। 7वीं बार निर्मला सीतारमण की ओर से ये बजट पेश किया गया है और एक इतिहास उनकी ओर से रचा गया। कल तक के लिए संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। उन्होंने 11 बजे से इसकी शुरुआत की थी और अब इसकी समाप्ति हो गई है और कल तक के लिए संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। इसके साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी केंद्र सरकार की ओर से लाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। ये योजना इसे और बढ़ावा देगी। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता देने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया। इसके साथ ही कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए ऐलान किया है। बजट की जो मुख्य बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। 3 से 7 लाख तक। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना लाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा है कि विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना समर्थित कोष से पूरी की जाएगी। सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए TREDS
मंच पर अनिवार्य रूप से जुड़ने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए करेगी। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर उपलब्ध करवाएगी। वित्त मंत्री की ओर से ये ऐलान किया गया है, जिसमें निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया अपने बजट भाषण में कि सरकार रोजगार से जुड़ी 3 योजनाएं शुरू करेगी। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर उपलब्ध करवाएगी, जिसमें ऋण राशि का 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, यानी कि 4 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने का ऐलान वित्त मंत्री की ओर से किया गया है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन से रोजगार उनको मिलेगा, उनका कौशल बढ़ाया जाएगा। इसके साथ फिर वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, इसको लेकर के लिए फिर से चुना। उन्होंने कहा कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है, ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। मुद्रास्फीति लगाकर नीचे बनी हुई है और 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और 4% की ओर बढ़ रही है। फिलहाल मुद्रास्फीति 3.1% पर है। कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता हमारी प्राथमिकता है, ये कहा गया निर्मला सीतारमण की ओर से। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हम उच्च पैदावार वाली किस्म की 9 फसलें लाएंगे। अगले 2 साल में देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट में गरीब महिला, किसान, युवा पर भी फोकस है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान सुरक्षा के अलावा गरीब महिला, किसान, युवा पर बजट में फोकस किया गया है। ये वो मुख्य चीजें हैं, ये वो मुख्य वर्ग हैं जिन पर फोकस यहाँ पर किया गया है। उसमें जिन्हें शामिल किया गया उसमें कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, ये तमाम जो मुद्दे हैं इनको फोकस में रखा गया। इसके अलावा गरीब तबके को फोकस में रखा गया है, महिला, किसान और युवा। जैसा कि हर बार मोदी सरकार के बजट में इन 4 सेक्टर्स पर फोकस किया जाता है। एक बार फिर जब निर्मला सीतारमण की ओर से मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया गया है तो इस दौरान महिला, गरीब, किसान, युवा पर बजट में फोकस किया गया। पीएम गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ाई गई है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से अपने भाषण के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ाए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है, यानी कि एक तरह से जिन लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा था उन लोगों के लिए राहत भरी ये खबर है। उन लोगों के लिए ये जो घोषणा निर्मला सीतारमण की ओर से की गई वो भी राहत भरी है, क्योंकि इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत इस योजना का लाभ 80 करोड़ से अधिक लोगों को अभी फिलहाल मिल रहा है और यही लोग अब अगले 5 सालों तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 के बजट को इससे पहले मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में ये बजट पेश किया गया। सदन के पटल पर यह बजट रखा गया और बजट में तमाम जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं वो सब की गई है। तो ये मुख्य बातें हमने आपको बताई कि बजट की क्या रही हैं, क्या घोषणाएं निर्मला सीतारमण की ओर से इस बजट में की गई। बजट की शुरुआत 11 बजे से की गई थी और अब इसकी समाप्ति हुई है। इस दौरान जो मुख्य बातें बजट में रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार आप देखिए, चाहे गरीब तबका हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, सभी को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। हालांकि टैक्स पेयर्स को लेकर भी उनको भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें बजट से थी और साथ ही साथ मिडिल क्लास को भी बहुत ज़्यादा जो उम्मीदें थी केंद्र सरकार के इस बजट से थी। अब देखिए, तांबे का सामान जो है वो सस्ता होगा, इस बात की घोषणा की गई है। सोना चांदी पर 9% कस्टम ड्यूटी कम होगी। सोने चांदी पर आपको बता दें कि 9% कस्टम ड्यूटी कम हुई है।
जिस तरह से सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे थे, उसके बाद अब कस्टम ड्यूटी में 9% की कमी की घोषणा की गई है। तांबे का सामान भी अब सस्ता होगा। ऐसे में कई घोषणाएं हैं जो निर्मला सीतारमण की ओर से इस बजट के दौरान की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बजट पेश किया है। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था। केंद्र सरकार ने अपना बजट 9 बिंदुओं पर आपको बता दें कि केंद्रित किया है। और अब आपको बताते हैं कि वो 9 बिंदु कौन से थे, किस वर्ग के लिए क्या घोषणा की है, किस वर्ग को इन घोषणाओं से क्या लाभ मिलने वाला है। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको बताया कि किस वर्ग के लिए जो घोषणा जिस भी वर्ग के लिए की गई है उस वर्ग को क्या लाभ इस बजट से मिलेगा वो आपको मंत्री की ओर से की गई। इसके तहत 3 योजनाएं शुरू होंगी, जिसमें ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को पहले महीने में 15,000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाएंगे। मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत 7.5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलेगी। भारत की शीर्ष कंपनियां 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। साथ ही 5,000 रुपए मासिक मानदेय के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की जाएगी। तो देखिए ये लाभ यहाँ पर युवा वर्ग को हो रहा है। युवा वर्ग को फोकस में रखते हुए इस बजट की घोषणा की गई है। ये घोषणा युवाओं के लिए की गई है ताकि उनको रोजगार मिल सके। वो उसका भविष्य जो है वो अंधकार में है। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान, मोदी के कार्यकाल के दौरान, मोदी के नेतृत्व में युवा जो है उसका जो भविष्य है वो अंधकार में है। ये तमाम बातें विपक्ष की ओर से लगातार कही जाती रही हैं, लेकिन अब उसी युवा के लिए केंद्र की घोषणा जो की गई है उसके तहत बताया गया कि 3 योजनाएं शुरू की जाएंगी। बंगाल को तो कुछ ही नहीं दिया है। बंगाली को वो लोग देखने नहीं सकता है, बंगाल को वो लोग देखने नहीं सकता है। दे कांट टॉलरेट बंगालीज, दे कांट टॉलरेट बंगाल पीपल। वो साफ हो जाएगा बीजेपी बंगाल से। तो देश का जो बजट है और 10 से 12 लाख तक 15% टैक्स की घोषणा इस बजट में की गई है। बारह से 15 लाख तक आपको बता दें कि 20% टैक्स की घोषणा की गई है। 3 लाख तक, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स की घोषणा। मोबाइल का सामान अब सस्ता हो जाएगा। सोने चांदी पर भी 9% कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। कैंसर की दवाइयां सस्ती हो जाएंगी। ये तमाम घोषणाएं इस बार की गई। सोलर के सेट्स भी सस्ते होंगे। तो एक्सरे और चमड़े के सामान जो है वो भी सस्ते होंगे। मोबाइल का जो सामान होगा वो भी। लगातार सोने चांदी के जो दाम है वो आसमान छूते जा रहे थे। तांबे का सामान भी इसी बीच सस्ता किए जाने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ये घोषणाएं की गई। सोने चांदी पर 9% कस्टम ड्यूटी घटाए जाने की बात कही गई है, ये घोषणा की गई है। इस बजट में पर्सनल टैक्स पेयर्स के लिए भी बड़ी घोषणा की गई, जिसमें नई टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने मोबाइल फ़ोन सस्ता करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा कैंसर की दवाएं भी सस्ती की गई हैं। लिथियम आयन बैटरी सस्ती करने की घोषणा की गई है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अब सस्ते हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी तक महंगे थे उनके दामों में भी कमी देखी जाएगी। साथ ही इंपोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती करने की घोषणा की गई है। सोलर एनर्जी, सोलर सेल बनाने के काम आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी में जो है उस पर कस्टम ड्यूटी घट जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स कस्टम ड्यूटी, ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर घटेगा। पेट्रोलियम अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी। पीवीसी
इंपोर्ट घटाने के लिए 10। हालांकि अब इस बजट को लेकर धीरे धीरे तमाम नेताओं की भी राय सामने आएगी, उनका भी ओपिनियन सामने आने लगेगा। विपक्षी दलों का इस बजट पर क्या कुछ कहना। तो जो बजट पेश किया गया है उसका असर आपको जो शेयर मार्केट है उस पर भी देखने को मिलेगा। गिरावट के बाद देखिए शेयर बाजार में सुधार हुआ है। तो देश के बजट में Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Phase 4 of the PMGSY will be launched to provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations, which have become eligible in view of their population increase. Irrigation and flood mitigation. एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है। सब सेक्शन के जो एलोकेशन हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से खास कर जो ईस्टर्न साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में वाला है। और विशेष रूप से जो स्किलिंग के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ है वो ऐतिहासिक है। और जितने कार्यक्रम चलाने वाले हैं और युवाओं के लिए रोजगार इससे उत्पन्न होने वाला है, ये देश का आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा योगदान होने वाले हैं। साथ साथ में महिलाओं को अलग से जो स्कीम सपोर्ट देने का जो प्रावधान रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग का खास करके पहाड़ों में दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज का थोड़ा सा कमी जो थे, वो भी इस बजट में वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है उससे नॉर्थ ईस्ट का फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत जोरदार से मेन स्ट्रीमिंग होने वाले हैं। इसके अलावा 3 करोड़ आवास योजना गरीबों के लिए शहरों में और ग्रामीण इलाकों में घर बना 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसका बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। लेकिन सर ऑपोजिशन ये कह रहा है कि आपने अपने एली पार्टी को खुश करने के लिए क्या है, ऑपोजिशन ने अगर बजट बोला है, ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं। क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ऑपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नजरअंदाज किया, कहीं ऐसा नजर नहीं आता है। हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए एक ड्रीम बजट है। आप टैक्स देखिए ना, कितना छूट मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, पेंशनर्स के लिए जो छूट दिया है, और कैंसर पेशेंट के लिए जो छूट दिया गया है दवाइयों के लिए, ऐसा बजट आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। सबसे ज्यादा बात बिहार और ये आंध्र प्रदेश को लेकर हो रही है। बिहार में भी राबड़ी देवी जी ने बोला कि झुंझुनू थमा दिया है, वहाँ पर स्थिति इतनी खराब है, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है। आप लोग जानबूझ के बिहार में जो नेपाल से फ्लड आते हैं उसको सिर्फ बिहार का प्रॉब्लम मत देखिए। बिहार में नेपाल से जो फ्लड्स आते हैं बरसात के समय में, तबाही मचते हैं, ये देश का समस्या है। इसको सिर्फ बिहार का समस्या क्यों बोलते हैं विपक्ष के लोग? ये बिहार क्या भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार का समस्या, बिहार का फ्लड का समस्या सालों से चलते आ रहे हैं। इसको इतना बड़ा कदम इस बार मोदी जी ने उठाया है, तो सबको इसको सराहना करना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए। अगर विपक्ष, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। निफ्टी और सेंसेक्स में फिर सुधार हुआ है। किरण रिजिजू को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने ड्रीम बजट
बताया है इस बजट को। उन्होंने बताया है कि किस तरह से महिलाओं के लिए इसमें बड़े ऐलान किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से मिडिल क्लास के लिए पक्ष की ओर से भी अब धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इमरान मसूद की ओर से भी केंद्र के इस बजट को लेकर बजट बताया गया है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से ये बजट डरा हुआ है, इसका अपना कोई विजन नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही ये बजट पेश हुआ है उसके बाद सेंसेक्स में anything about the key issues facing the common people of our country. There was no mention of Manrega. There was no mention or insufficient mention of any steps taken to improve the income of the ordinary person. We have seen far too little from the government when it comes to taking care of the severe income disparities in this country. Job creation, there was a token gesture made towards that, but unfortunately very short on specifics. And I personally welcome only one provision, which is this abolition of the tax on angel investors. I myself had recommended it to Shri Arun Jaitley more than 5 years ago. Finally, it has happened. I'm glad that's being done. We must have more investment coming in to generate more jobs. But otherwise, I find very little in terms of any good the pyramid to improve their incomes. We will have to study the budget in much more detail, but I would say it's an underwhelming budget. Sir, how do you see this budget? किया गया है उसमें बिहार तो कांग्रेस सांसद नेताओं की भी बजट में जो बिहार के विकास के लिए किया है, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसमें कहीं कोई कोताही करने का काम किया हो, चाहे वह पीएमजेएसवाई की रोड की बात हो, चाहे वह बोधगया की। भारत सरकार ने जिस तरीका से दिल खोल कर करके बजट में व्यवस्था किया है, इसका हृदय से बधाई करता हूं, हृदय से धन्यवाद करता हूं। Last year, we have seen so many 10 तो तमाम घोषणाएं बजट में की गई है निर्मला सीतारमण की ओर से। आज जब 7वीं बार बजट पेश किया गया, एक इतिहास